क्या सुशांत ने पहले ही तय कर लिया था कि उन्हें अपनी जान लेनी है? क्या इस बारे में एक हिंट सुशांत ने अपने दोस्त को दिया था? क्या कहना है सुशांत के दोस्त का, आइए बताते हैं। बॉलीवुड के दमदार एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे। उनके इस दुखद निधन से सभी शॉक में हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर पाना ही मुश्किल हो रहा है कि सुशांत जैसे टैलेंटेड एक्टर अब नहीं रहे। सुशांत के जाने के बाद मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज पर जोर दिया जा रहा है। सब इसी बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में सुशांत के एक दोस्त ने किया है शॉकिंग खुलासा। इसे सुन आप भी रह जाओगे दंग। सुशांत की दोस्त आयशा कपूर अदला खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक लेंथी पोस्ट शेयर किया और उन दिनों को याद किया जब वो सुशांत के साथ वक्त बिताया करती थी। इन्हीं बातों के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत ने उनसे सुसाइड करने के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "The very first time I met him was at his Bandra house and we spoke about suicide. I remember us looking down from his balcony, which was quite a few stories up, and he asked what it would feel like if he jumped. It catapulted us into a conversation about the value of life, the need for the thrill, the purpose of existence, stuff I've loved since I was a teenager. It was an enthralling conversation. We laughed, we drank, and I went back home with my friends. After that night, every time we would hang out, we would find ourselves cornering away from the crowd and delving deep into an existential conversation. There would be some spiritual question or dilemma plaguing him that would get my gears going. He was a refreshing beat amongst my friends in or off the industry, and I found our heated arguments and chats characteristic of the curious mind that he had. Of course, we would make fun of each other's appetite for mental masturbation. We would laugh about our midnight epiphanies and then go our separate ways till we bumped into each other again. I won't say we were close, but I do feel very confused today. He came across as a self-aware, thoughtful person. He was inquisitive, full of questions, but not in a reclusive, dejected way. He was different from all the other jaded famous people I met because he had all this energy and optimism, never flashy, very respectful and fun. I recall seeing a bucket list he had put out on his feed and thinking it was ambitious to say the least, but also very philanthropic. Interesting. This picture is from when I dressed up as Ziggy Stardust for my dear friend Aditya Singhar's birthday, and Sushant was one of the few people to recognize my cosplay and jump into a David Bowie rant. He had good taste. I thought he was cool. I just cannot wrap my head around what's happened. I don't know the words he used in his head. I wish he had a bouncing board to stop him in his tracks. It just goes to show that the strongest, workest, most stable individuals can be at risk mentally. The calmest minds can snap and nobody is an island." आगे अपने कॉन्वर्सेशन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "He came across as a self-aware, thoughtful person. He was inquisitive, full of questions, but not in a repulsive, dejected way. He was different from all the other jaded famous people I met because he had all this energy and optimism, never flashy, very respectful and fun." इस नोट को खत्म करते हुए आयशा ने लिखा, "Sushant Singh Rajput was not an island. Some timely help could have prevented this. Ask yourself, do you need to talk?" जब मैं उनसे पहली बार मिली तब हम सुसाइड के बारे में बात कर रहे थे। बालकनी में खड़े होकर सुशांत ये कह रहे थे कि क्या होगा अगर हम यहाँ से नीचे कूद जाए, और इन बातों से हम अपनी लाइफ को वैल्यू करने के बारे में बात कर रहे थे। वेल, इस पोस्ट के साथ उन्होंने सुशांत के साथ का एक तस्वीर भी शेयर किया है। आयशा इन बातों को अभी भी मान नहीं पा रही है कि सुशांत उनके साथ नहीं है। शी इज हार्ट ब्रोकन कम्प्लीटली। वेल, फिलहाल उनके दोस्त के इस शॉकिंग खुलासे के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.